हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑन सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। इस वीडियो में हम सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के बारे में समझेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। सिंगलटन पैटर्न इंश्योर्स दैट अ क्लास हैज ओनली वन इंस्टेंस एंड प्रोवाइड्स अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू इट। लेट्स अंडरस्टैंड द characteristics of singleton pattern. By having a private constructor, it prevents direct instantiation from outside of the class. Static method of access provides a static method called getInstance to access the single instance. Right? Lazy instance initialization, it is optional. The instance is created only when it is first requested. Now, there can be multiple examples, जैसे logging service. जैसे लॉगिंग सर्विस में वी टिपिकली हैव अ ग्लोबल सर्विस दैट इज यूज्ड थ्रू आउट एन एप्लीकेशन, राइट, जो इंश्योर करती है कि केवल एक इंस्टांस ऑफ द लॉगर यूज हो एंड विच सिंप्लीफाइज द मैनेजमेंट ऑफ लॉगिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टोरेज, राइट. सिमिलरली दे कैन बी अनदर एग्जांपल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. जब भी हम एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं तो वी वांट कि वो जो कॉन्फ़िगरेशन है ग्लोबली स्टोर हो एंड इट इज़ शेयर्ड अक्रॉस द कंपोनेंट्स, राइट, एंड डिफरेंट मॉड्यूल्स, राइट. तो सिंगलटन पैटर्न के थ्रू वी इंश्योर दैट द कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स इज लोडेड वंस एंड रीयूज्ड एवरीवेयर, राइट. सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम डेटाबेस कनेक्शन का. बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन हम चाहते हैं कि डेटाबेस कनेक्शंस एक हो, बिकॉज डेटाबेस कनेक्शंस आर क्वाइट एक्सपेंसिव टू क्रिएट एंड मैनेज. सिंगलटन पैटर्न के थ्रू वी कैन इंश्योर दैट अ सिंगल कनेक्शन इज यूज्ड थ्रू आउट द एप्लीकेशन एंड उसका ग्लोबल एक्सेस हो, ठीक है. सिमिलरली कैशिंग भी वी वांट कि उसका ग्लोबल एक्सेस हो. कैशिंग वी जनरली यूज फॉर कैशिंग द frequently accessed data in memory to speed up the performance, right. एंड सिंगलटन पैटर्न के थ्रू हम इंश्योर कर सकते हैं कि डेटा इज शेयर्ड अक्रॉस द एप्लीकेशन एंड इट हैज़ वन कैश स्टोर, right. So these are the couple of example. Now let's jump to our VS Code to see the implementation of the singleton pattern. Now let's understand सिंगलटन पैटर्न को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो हम डेटाबेस कनेक्शन की क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे विच विल अलाउ ओनली इंस्टांशिएटिंग सिंगल टाइम यूजिंग सिंगलटन पैटर्न, ठीक है. सो लेट्स डिफाइन क्लास डेटा बेस कनेक्शन, ठीक है. हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था इट हैज़ वी हैव टू क्रिएट ए स्टैटिक इंस्टेंस फॉर डेटाबेस कनेक्शन. सो लेट्स डिफाइन दैट प्राइवेट स्टैटिक इंस्टेंस डेटाबेस कनेक्शन and its constructor need to be private, right, so that outside से हम constructor call ना कर पाए to create the object. केवल इसी क्लास के अंदर इसकी एक्सेस रही console.log. Let's call it establishing new database connection, ठीक है. And we have to define a get instance method, static method, so that we can get the instance of our database connection, ठीक है. Public static add instance which returns database connection, right. And let's say अगर अब आते हैं हम लेजी इंस्टेंशिएशन पर. बेसिकली वी हैवंट येट क्रिएटेड इंस्टेंस फॉर डेटाबेस कनेक्शन. तो हम क्या करेंगे, इफ इट इज नॉट येट क्रिएटेड डेटाबेस कनेक्शन डॉट इंस्टेंस इज
is null, is undefined, then we will create the instance new database connection. ठीक है, इंस्टेंस बन गया. अगर ये ऑलरेडी बना हुआ है देन वी विल जस्ट रिटर्न द डेटाबेस कनेक्शन डॉट इंस्टेंस. ठीक है, एंड लेट्स डिफाइन अनदर मेथड फॉर क्वेरी के लिए एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं. पब्लिक क्वेरी और SQL कैन बी अ स्ट्रिंग फॉर्म में आ सकती है. एंड देन लेट्स कंसोल लॉग फॉर नाउ. कंसोल डॉट लॉग and executing query. And what can be the query? Query can be SQL, right? सही है. And let's define the client side code to create instances of this database. Client code constant db1 is equal to database connection dot get instance, right? And let's call a query as well, db1 dot query, db1 dot query select star from, let's say, from users. ठीक है, ये क्वेरी है सिंपल सी. और एक और कनेक्शन हम बनाने की कोशिश करते हैं, db2 and get instance. And now let's create a query for orders. ठीक है, db2. ठीक है, अब इसको रन करने की कोशिश करेंगे. एंड लेट्स डू वन मोर थिंग. कंसोल लॉग करते हैं कि चेक करते हैं कि ये दोनों कनेक्शन एक हैं या अलग अलग हैं. कंसोल डॉट लॉग db1 इज इक्वल्स db2. ठीक है, तो हमने क्या करा है, हमने डेटाबेस कनेक्शन करके क्लास बनाई है. इसके अंदर एक स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन किया विच इज़ अ प्राइवेट. And we created a get instance static method to access that instance of the database connection. And we have creating this instance. If it is not created yet, then it creates it. Otherwise, if it already have created an instance, then it just returns that instance, right? And then we have created the constructor as private so that it cannot be instantiated. This class cannot be instantiated from the outside. ठीक है, and then एक simple सा query method define कर दिया to query on this database connection. ठीक है, now let's start run this program. ठीक है, सबसे पहले इसने क्या किया, when हमने get instance कॉल किया फर्स्ट टाइम, तो it came here and it did not find any instance. तो उसने क्या किया, एक नया database connection बनाया. That is why you see establishing new database connection, and then it returned that instance. And then query के टाइम पे इसने query करा using this method executing query selected from users. And second time जब हमने get instance कॉल किया तो इसने दोबारा इंस्टेंस नहीं हुआ because it already had that instance, so it just returned that instance. That is why you don't see that. So it simply ran that query, executing query selected from orders. Now when we did this check for console log d11 v1 is equal to dv2, it returned true because both the instances are same. That means it has only created a single instance. So this is how you can implement a singleton pattern. If you like this, this video, then hit like button, and if you have any suggestion and feedbacks, please share in the comment section. Thank you.